May I come in, sir? Please, Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. have a seat. Thank you, sir. Please introduce yourself to the board members without revealing your name and place where you belong. Sir, I have done my schooling from Kendriya Vidyalaya and I have done my production engineering from VIT Meshra. And my hobbies are, sir, stage anchoring and public speaking. Okay. Stage anchoring and public speaking, Yes. right? Say you are working as a SDM or an administrative officer and you are asked to do the anchoring. Say you are doing the anchoring for the Rajgir Mahotsav or Dev Mahotsav. How you will introduce the cultural history of the Bihar briefly? The district magistrate has asked you, because your hobby is stage anchoring, to introduce the cultural history of the Bihar during the Rajgir Mahotsav or Dev Mahotsav. Sir, I'll start with that famous line is coming to my mind right now that तुझको मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन बिहार. I'll start with this line and then I'll focus on that how Nalanda has its glorious history and how it was burned brutally by Bakhtiyar Khilji, and then I'll ask the chief guest to come to the stage and do the lamp lightning, sir. Lamp lightning, I'll recite the shloka that Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhan Sampada Shatru Buddhi Vinashaya Deep Jyoti Namastute. And with these lines, I would request the chief guest to please come to the stage, lamp the light, and please kindly grant us the consent to start the program. अगर मानते हैं कि आप स्टेज एंकरिंग कर रही हैं और जो आपके डिग्निटरीज आने वाले हैं तब तक टेक्निकल ग्लिच आता है और टेक्निकल ग्लिच के कारण आप प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं कर पा रही हैं या जिस तरह से आप चाहती थी कि चले उस तरह से नहीं चलेगा. अब क्या करेंगे उस परिस्थिति में? ऐसा हो सकता है? होता है. क्या करेंगे? सर, पहले तो मैं देखूंगी अगर कुछ अवेलेबल हो, अगर इधर माइक अगर नहीं वर्क कर रहा हो तो कुछ स्टैंड बाई माइक हो या माइक अवेलेबल नहीं कर रहा, बिजली ही चला गया. सर तो कुछ तो टेम्पररी लाइटनिंग का सोर्स में वहाँ पे देखूंगी जो भी हो सके. इधर इमरजेंसी लाइट भी अगर वैसा प्लेस है तो जनरली एंकर्स पहले पहुंच जाते हैं देखने के लिए कि क्या ऐसे कुछ सिचुएशन हो सकते हैं या नहीं. तो अगर सर वैसा सिचुएशन होगा तो मैं कुछ लाइटनिंग का अरेंजमेंट पहले से रखूंगी कि ये सिचुएशन आ सकती है एंड देन फिर मैं उसको लाइटनिंग के उस बैकअप को जो मैंने प्लान किया है वो यूज करके एंड देन सर मैं बाकी टीम मेंबर से कोऑर्डिनेट करूंगी किसी भी तरह, इधर किसी को भेज के अगर लाइट नहीं है तो, और उनको बोलूंगी कि आप जाके काइंडली ये मैसेज क्राउड को कन्वे करें ताकि कोई वैसा इशू ना हो जाए कि लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि चीफ गेस्ट आ चुके हैं तो वो डिग्निटी से एसोसिएटेड इशू है. तो मैं ट्राई करूंगी कि ये मैसेज कन्वे हो और सब लोग पीसफुली बैठे रहें. एंड जब जनरली सर टेक्निकल ग्लिच ज़्यादा देर ऐसे प्रोग्राम्स में नहीं होता है तो फिर सिचुएशन उसके बाद मैं हैंडल करूंगी. तो चूंकि आपका स्टेज एंकरिंग और पब्लिक स्पीकिंग आपका हॉबी है, इसका मतलब कि आप एक्सट्रोवर्ट नेचर के हैं. यस सर. आप पब्लिक स्पीकिंग का इस्तेमाल करके तो ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक का जो रियल इशू है उसको डाइवर्ट कर दे. सर डाइवर्ट तो नहीं करूंगी बट मुझे लगता है मैं बेटर कम्युनिकेट कर पाऊंगी पब्लिक से एंड उनके इश्यूज को समझ पाऊंगी उनको. एंड डाइवर्ट करना सर एक ब्लैक एंड वाइट आंसर नहीं होगा. कामली उन चीज़ों को सुनना और भीड़ को एड्रेस करना मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ इशू है तो उनको सुनना, उनको शांत करना, क्योंकि बातचीत से ही सोल्यूशन निकलेगा. वो मॉब जब वो लोग कुछ ऐसा इवेंट कर रहे हैं या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं तो उससे सोल्यूशन नहीं होगा. मुझे लगता है मैं पब्लिक स्पीकिंग यूज करके उनको काम करके एंड जो मुद्दा है वो अगर मैं कहीं बीच में हूँ तो हायर अथॉरिटीज तक पहुँचा पाऊँ और भीड़ को भी शांत कर पाऊँ. ये सब मुझे लगता है राइट कोर्स ऑफ एक्शन होगा उस समय. आप बिरला इंस्टीट्यूट से पढ़ी हैं. What has been the contribution of the GD Birla in the film study? सर उन्होंने इंडिजिनस इंडस्ट्रीज वगैरह को काफ़ी फोकस किया था जितना मैं रिकॉल कर पा रही हूँ. एंड उन्होंने सर इंडिजिनस इंडस्ट्रीज का ही कंट्रीब्यूशन अभी मेरे दिमाग में आ रहा है. अंतिम प्रश्न ये है कि ये बताइए कि अगर आप STM के रूप में मिथिला वाले रीजन में पदस्थापित है Yes, sir.
और वहाँ अगर पब्लिक स्पीकिंग करती है या स्टेज एंकरिंग करने का मौका मिलता है तो आप फॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में करेंगे कि वहाँ के जो ग्रामीण डायलेक्ट है उसमें करेंगे? सर मैं सीखने की कोशिश करूंगी कि क्योंकि अगर मैं उस लैंग्वेज में करती हूँ तो लोग ज़्यादा मेरी बात को समझेंगे, फॉर्मल हिंदी से ज़्यादा मैं रिलेट कर पाऊंगी। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं जितना हो सके थोड़ा बहुत भी एटलीस्ट कुछ शुरू की लाइनें भी एटलीस्ट मैं मिथिला के लैंग्वेज में सीख के वो बोल पाऊँ सर। नहीं ठीक है। बिहार में मैथिली को तो मैथिली लैंग्वेज को तो रिकॉग्नाइज कर चुकी है एज वन ऑफ द लैंग्वेजेस, नेशनल लैंग्वेजेस। नाउ do you have any idea about the script of Maithili, original script? उसको क्या कहते हैं? Sir, I'm not sure, but I guess it's Devanagari script. नहीं, Devanagari is used. Everybody writes in Devanagari now, but the original script was called Tirhut. Tirhut, yes sir. Okay. It was similar to Bengali script. Okay. Yes. But then gradually people shifted to Devanagari. Now, your subject has been sociology. Yes sir. Can you tell us something about Sanskritization? Yes sir. What is it? And if there is any example that you can give. Sir, it was a concept coined by Shri M.N. Srinivas, and it is the process whereby the caste which are considered lower in strata according to the social norms, they try to emulate the customs and rituals of higher caste and practices which are followed by the higher caste. So they try to emulate those things and practice those things so that they can rise higher in the hierarchy and gain the self-esteem and esteem which is there in the society for higher caste. It is the process of Sanskritization. And example would be, sir, like sir, thread wearing ceremony were practiced by some lower caste to denounce the Hindu tradition that it is limited only to some higher caste. Well, in many temples now, Yes, sir. you will find that it is not necessarily that the priests are. Sorry, sir. The priests are not always of the higher caste. Yes, sir. In many temples, Yes, sir. even in Bihar, you will find it. Yes, sir. In Mahavir temple also, you will find it, Yes, sir. isn't it? So somehow that has attained recognition now by the society. Yes, sir. Nobody says कि साहब ये काहे हैं पंडित यहाँ बिल्कुल सर. या ये पुजारी क्यों. Yes, sir. So that way we can link it up. Secondly, can you tell us about some citizen-centric laws or schemes of government? Any idea? Bihar government, sir. Bihar or central? Sir, my GOV portal of the Prime Minister where we can directly interact and give our feedback. And sir, public grievance redressal portal is there where we can complain if we have not received any services. We can directly complain there. That is what by the Bihar government, isn't it? Yes, sir. And RTPS portal by Bihar government where we can digitally acquire the certificates, etc., which are required. We don't need to go to the office anymore. And one more, sir. Sir, right now I am recalling only these. Right to Information Act, Yes, sir. Yes, sir. Right to information. Yes, sir. isn't it? All right, very good. As you mentioned, M.N. Srinivas, Yes, sir. उनका एक कंसेप्ट है डोमिनेंट कास्ट का. Yes, sir. उसको आप बिहार की कास्ट हायरार्की में कैसे रिलेट करती हैं? Yes, sir. It is definitely it is prevalent in Bihar, and same the criteria which we are given by Shri M.N. Srinivas, those are visible in Bihar also. Like those castes which have higher amount of land on their name, they are definitely have a higher place in the hierarchy. And numbers, though in Bihar some higher castes have low numbers as per the recent caste census, but still they enjoy the authority of hierarchy in the society. However, M.N. Srinivas has told that number is a very major factor of the caste being dominant. They may be from the lower caste in the hierarchy, but since they have the number and land criteria, they enjoy the status of being the dominant caste.
However, in Bihar, even if the caste number is small, but it is associated with tradition that this caste was higher and this was lower. But the recent rise of creamy layer and वो जब सब कैटेगराइजेशन हुआ है जी। उसके कारण डोमिनेंट कास्ट एक सिंगल एंटिटी बन के नहीं रह गया। आपको ऐसा लग रहा है कोई एक सिंगल कास्ट डोमिनेंट कास्ट नहीं रह गया? आर यू? हाँ सर, ये है कि काफी सारी कास्ट अब डोमिनेंट हो गई हैं। इसका एक मेजर सर मुझे लगता है कि एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स भी हो गई हैं अब, जिसके कारण कास्ट हायरार्की में अब ऊपर आ गई है और वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन अब कास्ट में नहीं रहा है कि ये हायर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है। वो डिफरेंशिएशन थोड़ा ब्लर हो गया है जो लाइंस है सर। ठीक है। अभी एक डिस्कशन चल रहा था संस्कृताइजेशन का। जी। एक सोशियोलॉजी में इवॉल्विंग कंसेप्ट है डिजिटल वेस्टर्नाइजेशन। आर यू अवेयर ऑफ दिस? Yes, sir. Western, I can, whatever I am aware, I can say that digitally we are imitating the Western side. We consider that their culture and their norms, ethos, etc. are more superior. So we tend to emulate them, and through digital means we can emulate it more. Like whatever things they are doing in their society now, we can witness it digitally. Everyone can, even from the rural background, with the digital revolution, they can witness it, and that is imitation through the enhanced by digital means is kind of digital westernization concept. How you observe liquor ban in the sociological perspective? Sociological perspective, sir. Definitely, sir, it has both pros and cons. From a sociological perspective, I can say it is a good thing for women. Like the incidences of domestic violence, etc., has come down. So it is a good thing from women's perspective. Moreover, if the earnings are utilized for better things like education of children, construction of houses, that is the good use of money, not investing it in the liquor. Very, very. My last question would be, who is the current Chief Justice of Patna High Court? Sir, it was in the news 2-3 days back. I'm not remembering the name. Okay, how a Chief Justice of a High Court is appointed? Sir, it is appointed by a collegium of High Court judge, senior most judge, and 2 more members. And the governor gives him the oath. Don't you think this? नहीं, you correct कर दीजिए, थोड़ा confused हो गई है। Collegium system. Collegium is by in the Supreme Court. Yes, sir. It's not by. It's not right. Yes, yes. Don't you think this collegium system is an opaque system? And the thing that was brought, like NJC was brought in, वो ज़्यादा better था इससे. What is your point of view on this? Sir, I believe collegium is little bit of opaque system, and as per my point of view, sir, NJEC was a good system since we are having the meritocracy principle in the NJEC. So I don't find it a very fair system that judges are appointing the judges. But The point is, executive interference would have been more in the judiciary then, and executive is the prime litigant. Yes, तो sir. NJAC में तो फिर executive के उसमें member रहेंगे उसके appointment में. moreover, this point has been reiterated by Supreme Court also in that case. Sir, yeah, it's a very tricky thing to say that this is right or this is wrong, but sir, there should be some mechanism to ensure that Supreme Court has recently given the Election Commission judgment in which there was one leader of opposition, one Supreme Court judge, and one member from the central cabinet. So some kind of checks and balances should be there so that the merit is also inducted in the system, and the opaqueness should be reduced. Even if collegium is followed, the opaqueness of the system should be reduced. Like how they are selecting the judges, what criteria are used, or some public disclosure of kind of some criteria, like these criteria we are following. If collegium has to be followed, then some measures should be taken that it is no more that opaque. Sir. You can go.